વેલકમ બેક. પાકિસ્તાને T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત સાથે રમવાનો ઇનકાર કર્યો છે. ત્યારે આઈસીસીએ પાકિસ્તાનને ચેતવણી આપી છે, જો ભારત સામે નહીં રમે તો દૂરગામી પરિણામ ભોગવવા પડશે. ટુર્નામેન્ટના સફળ આયોજનની જવાબદારી બધાની છે. સાથે આઈસીસીએ એવું પણ કહ્યું કે પીસીબી પાસેથી ઓફિશિયલ કે પછી લેખિત સૂચનાની પ્રતીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે. આ પ્રકારનો નિર્ણય રમતની મૂળ ભાવના વિરુદ્ધ છે. કોઈ એક ટીમના નિર્ણયથી રમતની નિષ્પક્ષતા જોખમાશે. વર્લ્ડ કપમાંથી બધી ટીમ નક્કી કરેલા કાર્યક્રમ મુજબ જ રમે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદના પણ ચેતવણીના સૂર, જેમાં વર્લ્ડ કપમાં ન રમવાનો નિર્ણય જે છે તે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે તેવું પરિષદનું કહેવું છે. અને એવું પણ કહ્યું કે આની અસર પાકિસ્તાની ક્રિકેટ પર પડશે. आज के दिन में जो क्रिकेट का साथ जितना भी पावरफुल है जो क्रिकेट में वो है इंडिया. सारा कमर्शलाइजेशन पैसा सब 90% जो पैसा है ना जो इंडिया से जाता है, तो आप अपने आप खुद को ही डैमेज कर रहे हैं और किसी को नहीं डैमेज. वर्ल्ड कप भी डैमेज नहीं होगा. द शो विल गो ऑन, शो विल नॉट स्टॉप. थोड़ा तरस भी आता, थोड़ी हैरानी होती है कि चाहते क्या है. कि कहते हैं ना, हमारे विनाश काल है विपरीत बुद्धि. क्योंकि अगर आपने नहीं खेलना है तो अगर आप ये मैच खेल के आपने पॉइंट्स कंसीड कर दिए और आप आगे अगर इंडिया से मिलते हैं तो तब भी नहीं खेलेंगे क्या. तो अगर ये बात आपने तय कर ली है तो आईसीसी के पास कोई आपने रास्ता छोड़ा नहीं है. आईसीसी विल हैव टू किक देम आउट बिकॉज ये तो ब्लैकमेलिंग होगी ना. ये तो कॉर्नर कर दिया. और किसके लिए? क्योंकि अब मुद्दा क्या है, देखिए रीजन ये क्या है कि बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं. अगर आपको किक आउट करके बांग्लादेश को आप बुला लेते हैं तो फिर आपके पास क्या लोकल स्टैंडर्ड रह जाएगा. आप कैसे शक्ल बचाएंगे अपनी. पर मुझे लगता है कि वो सोच ही नहीं रहे. वो सोच रहे हैं कि देखिए सारे मतलब अपने घर को फूंक के जो है ना थोड़ी सी गर्माहट लेने के मूड में है वो.